वेलकम टू एजीपीजी स्टडी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल डेयरी साइंस. First of all, I tell you that I have shared experiment first to 5 in previous videos, so you can check them in the playlist. Experiment 6, simultaneously determination of preservatives in dairy products by HPLC and chemometric analysis. First, introduction. Nowadays, preservation techniques have considerable role in food industries. आजकल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स बहुत यूज़ की जा रही हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी ड्यूरेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए और भी उसकी फूड सेल्फ लाइफ को इन्हेंस करने के लिए और अच्छी करने के लिए प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है. सो sodium benzoate is known as the first chemical preservative approved in food products by the US Food and Drug Administration. Its solubility is more than other salt of benzoate like potassium and calcium. Potassium sorbate is produced by the potassium salt of 2,4-hexaxenoic acid, sorbic acid. The carboxyl group and conjugated double bonds in the sorbate structure are reactive and can have strong effect on the antimicrobial activity as well as the quantity and the safety of the product. In this study, samples were classified for checking with their relevant standard according to the name labeled on the packaging. Analytical method. The separate method for determination of benzoate, sorbate, and atomisine have been used in Iranian national standard, but there is no analytical method for determination of three preservatives simultaneously. So, method and material sampling. In this study, 195 samples of 15 brands and 5 types from commercial cheese and yogurts were purchased from supermarkets located in Tehran. The cheese samples were categorized by as follows: cream, processed Lebanon, Iranian cheese, lactic and brine cheese, flavored yogurt, fruit, vegetable and strained yogurt. सो इस चीज़ के जो सैंपल्स हैं वो कैटेगराइज्ड किए गए हैं. लेबनान इरानियन चीज़, ब्राइन चीज़, फ्लेवर्ड योगर्ट. Chemicals and reagents. Deionized water was prepared through the thermoscientific Brandstedt Easy Pure second system. Determination diagram है. This is the benzoate. This is the benzoate sorbate. Determination of preservation. Chromatographic conditions. सो इसमें क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस होता है. वॉज कैरिड आउट इन 1200 सीरीज HPLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से ये किया जाता है. फ्रॉम एजिलेंट टेक्नोलॉजी इक्विप्ड विथ 4 सॉल्वेंट लाइंस, हाई प्रेशर पम्प, डिगैसर एंड लूप इंजेक्टर एंड अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर. ये जो HPLC जो क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है, इसमें हम लिक्विड मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, अदर कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सेपरेट करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड सैंपल्स. Individual stock standard solution of sodium benzoate and potassium sorbate was prepared in deionized water and netamycin. Stock standard was in methanol. Method validation. The calibration curves of each preservative were prepared over the range of 5 to 40 mg per kilogram. The linearity and correlation coefficient for each standard curve of benzoate, sorbate, and netamycin. Statistical analysis. The obtained data was analyzed by the MATLAB R2106 and the triple S statistical package version 16 SPSS Chicago USA statistical significance set S, which is less. Results and discussions. 195 commercial daily products from
15 brands and 5 kinds of cheese. 5 kinds of cheese like cream, processed, labna, lactic and brine cheeses, and yogurts. Regular probiotic fruit, vegetable, and flavored strained yogurt were prepared in April 2015 till August 2015. Analytic method: the separate method from the determination of benzoate, sorbate, and netamycin have been. There is no analytical method for determination of three. पॉइंट सॉरी ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया है, तो ये आपको नहीं लिखना है. एंड दिस इज दैट. एंड preservative simultaneously the, the optimize the interaction the chemical structure of this preservative. The benzoate and sorbate were completely soluble in water. There is some similarity between our report and other works, but similarity between our report and other work but shorter runtime and suitable resolution of the study can reduce the cost of analysis and have some benefits in quantification as well as LOD, LOG, and recovery. Food sample analysis: the use of benzoate, sorbate, and netamycins as a additive for cheese and yogurts in forbidden by Lithuanian National Standard 2025-26 only sorbate and permits to added in the processed cheese at the maximum level of 100 milligram per किलोग्राम. सो ये कुछ फिक्स अमाउंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ मैक्सिमम लेवल है जो कि परमिट मिला है जो कि हम ऐड कर सकते हैं. देयरफॉर फॉर क्वांटिटी Therefore, for quality method control of these dairy products, determination of preservatives is necessary. The methods were applied to several kinds of commercial cheeses and yogurts. Each samples were divided according to kinds and brands. Kinds of brands पे डिपेंड करता है उसका डिवीजन. As has been described in sampling and result, 45 yogurts and 19 cheese among the 195 samples contain netamycin. Concentrated on netamycin in range from this to this, in yogurts of this to this. This to this in cheese, the amount of netamycin is 21.05% of contaminated cheese was found in higher concentration than the maximum legal limit of USA FDA. The highest concentration of netamycin was found in cheese samples with high percent of fat. This could be due to the greater solubility of netamycin contained for the yogurts and cheese. Samples are illustrated. The results show the presence of benzoate in the most of yogurts ranging from, while benzoate was not detected in the two probiotic samples and the lower amount of benzoate in other probiotic yogurts was observed. The conclusion is, in the research we aim to extract and evaluate the amount of preservatives including sodium benzoates. सो इस रिसर्च में हमने ये हमारा ये एम था कि हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करें और इवेल्युएट करें द अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूडिंग सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, नेटामाइसिन अमन डिफरेंट चीज़ इन योगर्ट. मीन जो चीज़ेस और योगर्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट और इवेल्युएट करें. So I'm going to tell about 5 kinds of cheese. First is cream cheese. ये चीज़ बहुत ही लाइट वेट होती है एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ क्रीम चीज़. सो ये मोस्टली केक बनाने में यूज़ की जाती है बिकॉज ऑफ इट लाइटनेस. सेकेंड इज प्रोसेस चीज़. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पार्शली राइपन एंड फुली राइपन चीज़ प्लस अ नंबर ऑफ सोडियम कंटेंट. इसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है और इसका कलर फ्लेवर एरोमा बहुत ही अच्छा होता है. मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन सैंडविच, पास्ता, पिज्ज़ा एंड डिप्स. And third is Lebna cheese. Lebna cheese is a thick, creamy, tangy cheese. It has a yogurt-like flavor. And fourth one is lactic cheese. Lactic cheese are primarily made with little to no rennet and rely primarily on the action of the bacteria convert the milk lactose to lactic acid. So इस lactic acid में
विदाउट रेनेट ये लैक्टिक एसिड बनाया जाता है विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जिससे कि जो लैक्टोज होता है मिल्क का, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिससे लैक्टिक चीज़ का फॉर्मेशन होता है। सो रेनेट एक सो विदाउट रेनेट ये चीज़ बनती है। तो रेनेट एक एंजाइम होता है, तो वो इस चीज़ में यूज़ नहीं किया जाता है। और जो कुछ अदर टाइप्स की चीज़ होती हैं, अदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीज़ होती हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इंडिया में माइक्रोबियल रेनेट का यूज़ किया जाता है। फ्रॉम माइक्रोबियल रेनेट प्लांट बेस्ड वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं रेनेट बनाने में। और एक एनिमल बेस्ड भी रेनेट होता है, जो कि रूमिनेंट एनिमल के स्टमक से बनाया जाता है, जो इंडिया में यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे माइक्रोबियल रेनेंट इन इंडिया, माइक्रोबियल रेनेंट इज यूज फॉर मेकिंग द cheese. And the example of lactic cheese is fresh ricotta, cottage cheese, cheddar. It is brine cheese. Brine cheese, also sometimes referred to as pickled cheese for some varieties, is cheese that is matured in brine in an airtight or semi-permeable container. इस एयरटाइट और सेमी परमेबल कंटेनर में रखने की वजह से इस चीज़ की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वार्मर कंडीशन में भी इसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। An example of brine cheese is feta. This cheese is made from feta. This cheese is made from sheep milk or mixture of sheep or goat milk.